Hello students, the question is two positive ions each carrying a charge small q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be E being the charge on an electron, and the given options are option A 4 pi epsilon naught F d square upon E square, option B square root of 4 pi epsilon naught F E square upon d square, option C square root of 4 pi epsilon naught f d square upon E square, and option D 4 pi epsilon naught f d square upon q square. So the problem is based on the topic Coulomb's law and this particular formula that charge is related to the number of particles and the charge of electron as q equals to ne. So the situation is like this. There are two charges. Basically these are the ions which are deficient in electrons, and if the charge on each is q, which is a positive charge, this charge is created due to the deficiency of electrons, and we can relate this charge with the number of electrons that move away from the respective atom so that they become ion. So according to the formula, the number of charge carriers which are transferred out, the number of electrons which are transferred out from the atom to make them ion is n, and q is the charge. So q equals to ne. This is the formula which we have to use here. Now we know that force between them is given by F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, or the distance between them is d, so we can say that d square. So it is q into q, which is q square upon d square, and as we have shown here, q equals to ne. So we can write it down here, 1 upon 4 pi epsilon naught ne whole square upon d square. Now we have to find out the number of electrons missing. So this number of electron we can calculate like this. Cross multiply this value 4 pi epsilon naught d square to f. So this becomes f into 4 pi epsilon naught d square, and cross multiply this e square here. So we get this value as n square. Now the value of n it implies that n is equal to square root of 4 pi epsilon naught. We put it in front of f because it is in this form, 4 pi epsilon naught f d square upon e square. So if we see the different options, option C is matching with it, square root of 4 pi epsilon naught f d square upon e square. This is the result. तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि दो आयंस हैं जिनके ऊपर चार्ज दिया हुआ है Q और ये सेपरेटेड हैं एक डिस्टेंस D से. अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है F, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग होंगे हर एक आयन में से. E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. तो यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट यूज़ किया जाना है वो है कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन. कूलम्स लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला है वो यूज़ किया जाना है. साथ के साथ जो आयन क्रिएट हुए हैं कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से, इलेक्ट्रॉन के हटने की वजह से हुए हैं. तो जितने इलेक्ट्रॉन हटे होंगे, जितना चार्ज की डेफिशिएंसी होगी, उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर चार्ज Q इस समय प्रेजेंट है, इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज Q जो है वो मूव आउट हो चुका है, और जो कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये Q बराबर होगा, ये जो आप Q देख रहे हैं ये बराबर होगा Ne के. तो इस तरह से N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो मूव अवे हुए हैं, और E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज. तो ये हमने यहाँ शो किया है कितना चार्ज मूव आउट हुआ है. जितना चार्ज मूव आउट हुआ है एग्जैक्टली उतना ही यहाँ पे चार्ज है. तो इसके प्लेस पे हम Ne लिख सकते हैं, और जो हमारा फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, उसमें Q के प्लेस पे हम इस Ne को पुट कर देंगे, और यहाँ पे हमें इस N को कैलकुलेट करना है क्योंकि हमसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग पूछे जा रहे हैं. तो इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर. तो फाइनल आंसर हमारा आता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 pi epsilon naught f d स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर. सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. So hope you understand the explanation. Thank you.